and then re-elected in 2023 for a full 6-year term. Well known for her passionate participation in the House, Ms. Dola Sen is a dedicated trade unionist and has made significant contributions in her role as a member of the Employees State Insurance Corporation for 2 terms, 2019 to 2023 and December 2024, continuing in the state of West Bengal. A graduate in mathematics from Calcutta University, Ms. Dola Sen has edited several books in Bengali. She holds certifications in the Science Talent Search Test as well as in music, singing competitions. Her talents extend much beyond decorous dramatics in the House to the real world of dramatics, where she has excelled, showcasing diverse skills. Honorable members, on my own and behalf of this House, I wish her a long, healthy, happy life and extend greetings to her family members. Honorable members, when I was Governor State of West Bengal, the Honorable Parliament member came to see me. Now her voice is always in high decibel. So when they were interacting with me, the security outside was highly in alert mode. Then one of them could pick up courage to see whether I was safe. I have never been safer more than in the company of honorable members of Parliament, and destiny has brought me here. Papers to be laid on the table. Sri Jayant Chaudhary. Honorable Chairman, sir, with your kind permission, I rise to lay on the table of the House papers mentioned against my name at serial number 2A of today's revised list of business. Sri Bandi Sanjay Kumar. मैं आज की संशोधित कार्यवाही में क्रम संख्या 2B पर मेरे वरिष्ठ सहयोगी श्री नित्यानंद जी के नाम के सम्मुख लिखित दस्तावेज सभा पर रखता हूं। प्रोफेसर SP सिंह बघेल। सभापति महोदय, मैं आज की राज्यसभा की पुनरीक्षित कार्यसूची में मेरे नाम के आगे क्रम संख्या 2 पर किए गए प्रपत्र सदन के पटल पर रखने की अनुमति चाहता हूँ। श्री अजय टमटा। महोदय, आपकी अनुमति से मैं संशोधित कार्यसूची के क्रम संख्या 4 पर मेरे नाम के सामने उल्लेखित पत्रों को सदन के पटल पर रखता हूँ। श्री बंडी संजय कुमार। मैं आज की पुनरीक्षित कार्यसूची में क्रम संख्या 2E पर मेरे नाम के सम्मुख लिखित दस्तावेज सभा पर रखता हूँ। श्री सुकांता मजुमदार। Honorable Chairman, sir, with your kind permission, I rise to lay on the table of the House the papers mentioned against my name at serial number 6 in today's revised list of business. श्रीमती सावित्री ठाकुर। महोदय, आपकी अनुमति से मैं आज की संशोधित कार्यसूची क्रम संख्या 6 पर मेरे नाम के समक्ष सूचीबद्ध दस्तावेज सदन के पटल पर रखती जाती हूँ। श्री हर्ष मल्होत्रा। Respected Chairman, sir, with your permission, I rise to lay the papers mentioned against my name at serial number 2H of the revised list of business. Message from Lok Sabha, Secretary General. Sir, with your kind permission, I rise to report that the Lok Sabha at its sitting held on the 25th of March 2025 passed the Boilers Bill 2025 with some amendments. The bill was passed by the Rajya Sabha on the 4th of December 2024. I lay a copy of the bill as amended on the table. Reports of the department related Parliamentary Standing Committee on Education,
Women, Children, Youth and Sports, Shri Ghanshyam Tiwari. माननीय सभापति महोदय, मैं विभाग संबंधित शिक्षा, महिला, बाल, युवा और खेल संबंधी संसदीय स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन अंग्रेजी तथा हिंदी में प्रस्तुत करता हूं। 1. स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के अनुदान मांगे 2025-26 पर 363वां प्रतिवेदन और 2. उच्चतर शिक्षा विभाग के अनुदान मांगे 2025-26 पर 364वां प्रतिवेदन। Report of the Department related Parliamentary Standing Committee on Housing and Urban Affairs, Shri Ayodhya Rami Reddy Allah. Thank you, Chairman Sir. I rise to lay the fourth report on action taken by the government on the recommendations, observations contained in the first report of Department-related Standing Committee on Housing and Urban Affairs 2024-25 on the subject Demands for Grants 2024-25 of the Ministry of Housing and Urban Affairs, Hindi and English versions listed against my name in today's list of business. Thank you. Reports of the Committee on Public Accounts, Shri Shakti Singh Gohil, Shri Tiruchi Shiva, we'll take it later on. Yes. Reports of the Committee on Public Accounts, Honorable Member of Parliament, Shri Tiruchi Shiva. Sir, I lay on the table of the House the reports, a copy each in English and Hindi of the following reports of the Committee on Public Accounts 2024-25. 19th report of the Committee on Compliance Audit of Central Board of Indirect Taxes and Customs. 20th report of the Committee on Suboptimum Utilization of the Capacities of GS-18 Satellite. And 21st report of the Committee on Short Closure of Project for Development of Special Grade Carbon Fiber. Thank you, sir. Statements of the Committee on Welfare of Other Backward Classes, Sushri Kavita Patidar. माननीय सभापति महोदय, मैं आज की कार्यसूची में मेरे नाम के सामने यथा सूचीबद्ध अन्य पिछड़ा वर्गों के कल्याण संबंधी समिति के दूसरे और चौथे की गई कार्यवाही प्रतिवेदन 18वीं लोकसभा में अंतर्विष्ट टिप्पणियों सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई अंतिम कार्रवाई को दर्शाने वाले 2 विवरणों के हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण की एक प्रति सभा पटल पर रखती हूँ। Honorable members, 4 notices have been received under Rule 267. The notice of Shri Sanjay Singh demand discussion over adverse impact of upcoming delimitation exercise in various states. The notice of Shri Ramji Rao Suman demands discussion over the ongoing protest by farmers and need for government to resolve their issues. The notice of Shri Saket Gokhale demands discussion over the alleged lapse of Election Commission in issuance of multiple duplicate electors' photo identity cards across the states. The notice emanating from Shri Santosh Kumar P. demands discussion over the misuse of enforcement directorate by the government. Honorable members,
I do not find any ground to accord my sanction to these, and I would try to accommodate the honorable members if they would make a request for 0 hour in precedence. Honorable members, I need to indicate to the House that we yesterday had a very fruitful interaction on the issue that is agitating minds of the public. There was gracious presence of leaders of political parties, including leader of the House and leader of the opposition. Without going into the details, the deliberations were consensual, reflecting cooperation, concern, and the issue is not between institutions inter se. It is not that executive, legislature, or judiciary are pitted against each other. All the institutions in the country have to function in tandem, in togetherness, and also there are checks and balances which are well meant. It has been given by both leader of the House and leader of the opposition that after having wider consultations amongst all concerned in their respective parties and otherwise, they would come to the chairman for further deliberations. That was the conclusion after both leader of the House and leader of the opposition had shared their thoughts along with others. Matters raised with permission. Srimati Sonia Gandhi regarding non-fulfillment of maternity entitlements under National Food Security Act 2013 and PMMVY. Honorable Chairman, thank you for giving me this opportunity. I rise to address this House on a matter of great importance: the non-fulfillment of maternity entitlements under National Food Security Act 2013 and Pradhan Mantri Matru Vandana Yojana. The National Food Security Act was passed by Parliament in September 2013 under the leadership of Dr. Manmohan Singh Ji. It has been the foundation for the Pradhan Mantri Gharib Kalyan Yojana. The Act also includes ₹6,000 per child as maternity entitlement for pregnant women in the informal sector. The Pradhan Mantri Matru Vandana Yojana, or PMMVY, launched in 2017, seeks to fulfill this entitlement, but it provides only ₹5,000 for the first child, that is extended to the second child also if it is a girl. According to one informed analysis in the year 2022-23, about 68% of pregnant women received at least one installment of PMMVY for first birth. But in the very next year, this proportion fell drastically to just around 12%. I would like to ask the Union government, why was this allowed to happen? Sir, the full implementation of the maternity benefits provision of the NFSA 2013 requires an annual budget of around ₹12,000 crores. It is surprising that the budget documents do not contain information on allocations for the PMMVY separately. All that the documents reveal
is that there is a program called Samarthya in the Ministry of Women and Child Development. This has 5 components, of which the PMMVY is one. The allocation in 2025-26 for Samarthya is only rupees 2,521 crore. This clearly shows that the PMMVY is severely underfunded, thereby violating the key provisions of the law passed by Parliament itself. Sri Dola Sen need to reconsider the advisory of reducing cooking oil in midday meals under the Pradhan Mantri Poshan Shakti Nirman PM Poshan. Your birthday. Thank you, Chairman, sir, for giving me opportunity to speak on my zero-hour submission on need to urgently reconsider of advisory to reduce cooking oil in midday meals. The Union Government has issued an advisory recommending a 10% reduction in cooking oil uses in midday meals under the Pradhan Mantri Poshan Shakti Nirman PM Poshan scheme, aiming to combat childhood obesity. While addressing obesity is important, sir, this directive may not consider the diverse nutritional needs of children across the country. Many students relying on midday meals come from economically disadvantaged backgrounds where malnutrition rather than obesity is prevalent. Healthy fats from cooking oils are essential for growth and cognitive development. A blanket reduction even could inadvertently deprive these children of necessary nutrients. Moreover, concerns have been raised about the potential impact on meal equality. Reducing oil content might lead to the use of lower quality ingredients or dilution methods using water, compromising both taste and nutritional value. Stakeholders have criticized the advisory as unscientific, calling for a comprehensive nutritional assessment before implementing such measures. Additionally, the advisory lacks empirical data supporting the correlation between current oil uses in midday meals and rising obesity rates among school children. Without such evidence, policy changes may be misguided and potentially harmful, sir. Given these concerns, it is imperative that the government re-evaluates the advisory. A thorough evidence-based study should be conducted to assess the nutritional implications of reducing cooking oil in midday meals. Policies should be tailored to address regional health changes, ensuring that interventions are aligned to the realities on the ground and not averse to them. हम सोचते हैं सर पर स्टूडेंट पर चाइल्ड फंड रेट रुपीस अलॉटमेंट को बढ़ाना चाहिए. I urge upon the Union Government ताकि it may be taken up in serious note and the advisory may be revoked so that the children from downtrodden families who are large in numbers, the majority of our population, may get their rights as per law. Thank you, sir. Thank you, Doladi. Thank you. Please. Honorable Sri N. Sanmugam, need to review, please sit down. Need to review the facial recognition system for using take-home ration to the beneficiaries under Integrated Child Development Services scheme through Anganwadi workers. Sir, I am raising a very important matter on the problem being faced by the beneficiary under ICDS program. Representation have been received from various stakeholders against the introduction of two-phase authentication system for take-home ration distribution through Anganwadi workers for beneficiary under ICDS. Under Mission Section Anganwadi and Mission Boshan Supplementary Nutrition is provided to children, pregnant women, lactating mother to address the challenge of malnutrition. Even the pregnant mothers are compelled to come to the Anganwadi centers to do facial recognition for getting the ration.
because of this cumbersome procedure and not getting OTP, as the mobile which is registered might be with a male member and not readily accessible to beneficiary. Many people are not able to avail the benefit. This system has also been put strain in the Anganwadi workers as they have to carry kits to the centers, and sometimes they are not received and due to tower problem, phones does not work. Even all the Anganwadi workers are not having smartphones. This system may reduce the strength of the beneficiaries, in which the funds will also be reduced to the state, which is not fair. Sir, they are getting only meager honorarium, which is less than the minimum wages declared by the various state governments. The enormous amount of work which they have to perform, it is nothing but exploitation of workers. Hence, their salary should be increased and other welfare benefits like PF, ESI, pension should be extended to them. At many places, Anganwadi workers are going on strike. I would therefore demand that the ministry should review the conditions of the facial recognition for issuing take-home ration to beneficiaries and should simplify the procedure for issuing ration, as the old system has also got the transparency and verification through register after getting the beneficiary signatures. Thank you. Thank you, Shanmugamji. Sri B. Parth Sardhi Reddy, concern over the reciprocal tariff imposed by the United States on Indian pharma exports. Thank you, Honorable Vice Chairman, sir. Today I wish to draw the House's urgent attention to the most worrisome and immediate threat to the Indian pharmaceutical industry owing to the US reciprocal tariff proposed, which may come into force any time from now on. This could badly impact on industry which is very vital to our country's economy and immediate job threat to over 30 lakh Indians. In 2023 to 24, India exported about $9 billion, that is 74,000 crores worth of pharma products to the US, and exports are growing rapidly. This makes the US the largest importer of Indian pharmaceutical products, accounting for over 31% of the India's total pharma exports. The Indian pharmaceutical industry, which is considered as pharmacy of the world, is likely to face significant challenges due to the US reciprocal tariff policy. Sir, Indian pharma products will become more expensive in the US market, which may result in substantial loss in US market share for our Indian pharma companies. This could lead to reduced profit margins, especially for low-cost generic medicines, and they may become uncompetitive, and most of their investments may not be viable. In terms of economic impact, the Indian pharmaceutical sector contributes significantly to India's GDP and foreign exchange earnings. The reciprocal tariff proposal could lead to forex revenue declines and potential job losses, affecting employment in manufacturing, research and distribution chain, and suffer competitive challenges. Sir, as a scientist, I urge the Government of India through this August House to treat the matter on utmost priority and act aptly. Few remedial measures our government may consider are engage in diplomatic talks with the US government to resolve the issue amicably. India can highlight the importance of pharmaceutical exports to the US and explain the potential consequences such as cost hike medicines, shortage of availability of life-saving medicines for US patients. Sir, pursue free trade agreement with the US, review the US-Indian Trade Policy Forum to ensure that it is effective in addressing trade issues, including tariffs on pharmaceutical products. Sir, provide support to the Indian pharmaceutical industry, such as special incentives, subsidies, tax breaks, or other any benefits to help them to absorb the impact of US tariffs and become more competitive. Encourage Indian pharmaceutical industry companies to develop new strategies such as operational efficiencies through automation, cost optimization, and more focus on R&D for technology upgradation. Extend special financial support for pharma companies for R&D to develop new technologies and innovative molecules to compete globally. Sir, by considering the above remedies, the Indian government can mitigate the impact of US reciprocal tariffs on Indian pharma products and safeguard the pharmaceutical industry. Thank you, Mr.
Manishri Vaiko need to take steps to ensure safe disposal of Kukudam nuclear waste in the state of Tamil Nadu. Honorable Deputy Chairman, there was a proposal to establish atomic plant in Gujarat state in Bhavanagar near Mithivirdi village. At that time, the CM of Gujarat, Mr. Vijay Rupani, did not allow. So Gujarat is very dear to the Honorable Prime Minister, therefore he never attempted to establish atomic plant in Gujarat. On 22nd November 1988, when the President of the then USSR, Mr. Gorbachev, came to India, the Honorable Prime Minister made a statement in both the houses of the Parliament. While welcoming the arrival of Gorbachev, the PM stated that India and USSR signed an agreement to establish an atomic plant in India. In Lok Sabha, there was no protest after making the statement. In Rajya Sabha also, I was only one member who sought clarification from the PM, asked which place you have selected, and said you planned an atomic plant in Kudangulam, the seashore of Tamil Nadu, and public and fishermen are agitated when they came to know about this. But you have suppressed this fact. Nuclear disasters happened in the atomic plant in 3 Mile Island in USA, Chernobyl in Soviet Russia, and thousands of people died, and people are still suffering. If any disaster happens, southern districts of Tamil Nadu will be totally destroyed. Protesting against Kudangulam, thousands of fisherwomen observed relay fast and agitated for 18 months continuously. I also went there thrice. The criminal cases were launched against the agitating public by the then state government. Many were arrested. I am also one of the accused in the agitation. Now 4 plant units have already been established. 2 more units are proposed, and the whole area is becoming nuclear shell. Lakhs of people will be affected. Unimaginable deaths will happen in case of disaster. Now, $1 million question is where they are going to dispose nuclear waste safely. Now the nuclear waste are put there itself in the plant. I came to know they are going to deposit now in the sea. A volcano is sitting on our heads. Poolagan Anbargal and NGO in fighting the case approached the Supreme Court. The Supreme Court said that atomic plant should be built a deep geological repository by 2018. When it was not ready, the NGO approached the Supreme Court, and the Supreme Court granted time till April 2022 for building DGR. But till this date, nothing has moved. In Japan, Fukushima, 11th March 2011, nuclear disaster happened and many people died. A volcano is sitting on our heads in southern districts of Tamil Nadu, and they are not going to deposit this nuclear waste anywhere other than the seashore near the plant and the sea. The demand of the people of Tamil Nadu in southern districts is to close down the atomic plant permanently. I urge upon the government, the Honorable Prime Minister, to take steps to close down the atomic plant and save the people from the impending catastrophe. Thank you. Thank you, Vaikoji. Manishri KRN Rajesh Kumar, demand for increase in wheat allocation to the state of Tamil Nadu. Thank you, Honorable Deputy Chairman, sir. Sir, my 0-hour subject is demand for increase in wheat allocation to the state of Tamil Nadu. I rise to bring to the notice of the House the urgent need to address the wheat shortage in Tamil Nadu, sir. Under the leadership of Honorable CM Talabadi, the breakfast scheme is being successfully implemented in Tamil Nadu schools to improve nutrition and attendance. Currently allocating only 8,576.02 metric ton wheat under the National Food Security Act, whereas the consumption of wheat in the state has increased to 23,000 metric ton per month, sir. Sir, as the Tamil Nadu is not a wheat producing state, it depends on supplies from the Food Corporation of India. I request the Honorable Union Minister of Consumer Affairs, Food and Public Distribution to arrange for an increase in the allocation of wheat to 23,000 metric ton per month. If this is not possible under NFSA, I request the Minister to consider supplying 15,000 tons of wheat under the open market sales scheme, sir. This increase in allocation will not only meet the growing demand for wheat in Tamil Nadu, but also ensure that the people of the state have access to this essential commodity at affordable price, sir. Sir, I urge the Minister to take immediate action in this regard, sir. Sir,
Honorable Chairman, sir, the union government should be a mother bird, treated each state with equal respect and address their concern through equitable governance. Thank you, sir. Thank you, Rajesh ji. Sri A.D. Singh ji, demand to impose custom duty on soybean oil imported from Nepal and other Southeast Asian countries. Thank you, Honorable Deputy Chairman, sir. Steep surge in import of soybean oil from Nepal adversely affecting Indian farmers. During the financial year 2024, the import of soybean oil from Nepal has increased more than 14-fold as compared to the previous financial year. The surge of soybean oil import from US 2.81 million in 2023 to US 38.15 million in 2024. This is when Nepal is only a marginal producer of soybean oil. It so happened that the custom duty on soybean oil import was 13.75 before September 2024, and in September 2024, it attracted the basic custom duty on soybean oil was 20% to protect Indian oilseed farmers. Now the soybean oil attracts a duty of as high as 35.75%. However, under the Nepal-India Treaty of Trade 2009, Nepal enjoys zero duty assessed for the export of its products into India. This steep rise in the duty in September last year is the main reason why the import of soybean oil from Nepal skyrocketed in November 2024. The significant price gap has incentivized the traders to reroute soybean oil through Nepal for duty-free access to the Indian market. Surprisingly, during last financial year, the import of soybean oil from Brazil, which is the main supplier of soybean oil, was reduced from US 300 million. Also, China, one of the largest exporters of soybean oil, does not export to India directly. The steep increase in import has created some concern in the country, as the import of soybean oil is seriously hurting domestic refiners and farmers and causing revenue loss to the government. The experts feel that the import surge could be result of possible flouting of rules of origin and bypassing trade regulations. In view of the above, it is urged that the government should impose a minimum import duty on soybean oil imported from Nepal and other Southeastern Asian countries, ensuring that it is not lower than the price of domestically produced oil extracted from oil seeds as per country's minimum support. I request the government to review the Nepal-India Treaty and other agreements so that the interests of oil seed producing Indian farmers could be protected. Thank you, sir. Dhanyavad. Sri P. Wilson, demand to address the anomalies existing in the reservation roster system. Thank you, Honorable Deputy Chairman, sir. Sir, there is deliberate tinkering of the Department of Personnel and Training roster system applied in reservation and used in public employment with the union government and its agencies. This manipulation has systematically deprived scheduled castes, scheduled tribes, and other backward classes of their rightful representation in the public employment and also to head the government organizations. Reservation was introduced as an instrument of social justice to ensure fair representation for historically marginalized communities, and the reservation roster is a crucial component in implementing this policy. However, the reservation roster, as outlined in the Department of Personnel and Training DOPT Office Memorandum dated 2/7/1997, is fundamentally flawed. The issues continued with the subsequent memorandum dated January 31st, 2019. These anomalies have resulted in the wrongful excess allocation of posts to unreserved candidates at the expenses of the reserved candidates. For example, according to the 2019 DOPT memorandum, in the 13-point model roster, 9 out of the 13 posts, including 1 EWS, are assigned to unreserved candidates instead of the rightful 6, an unjust gain of 3 additional posts. In department organization with only 2 sanctioned posts, both positions are assigned to unreserved candidates, completely eliminating representation for the reserved candidates. In a cadre strength of 6, 5 positions are allocated to unreserved candidates instead of appropriate 3. In small cadres with less than 10 posts, 70% of the posts in a cadre of 10 are assigned to the unreserved candidates instead of the correct 50.5%. 83% of the posts in a cadre of 6 are assigned to unreserved candidates instead of the correct of 50.5%.
100% of the posts in a cadre of 3 are assigned to unreserved candidates, completely eliminating the reservation. These data furnished by me are not mere statistical discrepancies. They are systematic efforts to eliminate reserved candidates and favor unreserved candidates, which constitute a direct violation of the constitutional mandate for social justice. The first roster point, which carries significant importance, has been exclusively assigned to unreserved candidates across all government institutions, leading to a deliberate distortion that ensures SC, ST, OBC candidates are denied fair representation in Group A and B posts. Sir, to perpetuate an error is a sin, but to correct it is an administrative duty. The existing roster system represents a structured deception designed to suppress the rightful opportunities of marginalized communities, preventing them from entering mainstream positions such as the heads of the organization and secretaries of the department. This constitutes a constitutional betrayal and an ongoing injustice that has persisted for decades. I urge the Honorable Prime Minister of India and the Honorable Minister for the State of the Personal and Pension and Public Grievances to take immediate action to end this rigged reservation system and form a high-level committee with a retired Supreme Court judge from the disadvantaged. Thank you. Dr. Sangeeta Balwant. Dr. Sangeeta Balwant demand to establish a CSD military canteen and ECH center in the Gazipur district of Uttar Pradesh. माननीय उप सभापति महोदय जी, आपने मुझे उत्तर प्रदेश के मेरे गृह जनपद गाजीपुर के सैनिकों से जुड़े एक महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का सुअवसर दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय उपसभापति महोदय जी, हमारा जनपद गाजीपुर वीरों की धरती के नाम से जाना जाता है, जहां पर परमवीर चक्र विजेता वीर अब्दुल हमीद, महावीर चक्र विजेता रामउग्रह पांडे, डॉक्टर श्री पूजन राय, कमलेश सिंह, हरेंद्र यादव, मोहम्मद इश्तियाक खां जैसे अनेक वीरों ने जन्म लिया है और जहां पर लगभग 200 की संख्या में इन शहीदों की वीर नारियां निवास करती हैं। सभी सेनाओं को मिलाकर 3,382 वीर नारियां निवास करती हैं एवं वर्तमान में सभी सेनाओं से 30,026 की संख्या में रिटायर्ड सैनिक निवास करते हैं तथा लगभग 40,000 की संख्या में सैनिक वर्तमान में सेवारत हैं। वीरों की इस धरती गाजीपुर के सैनिकों के कल्याण एवं सुविधा हेतु जनपद गाजीपुर में CSD कैंटीन नहीं है। यहाँ कैंटीन के नाम पर 39 GTC वाराणसी का एक्सटेंशन काउंटर है, जो जनपद गाजीपुर के सैनिकों के लिए पर्याप्त नहीं है और सैनिकों को सामान लेने हेतु 100 किलोमीटर की दूरी तय करके वाराणसी जाना पड़ता है। दूरी के कारण वृद्ध सैनिक अपना सामान लेने से वंचित रह जाते हैं। जनपद गाजीपुर में सैनिकों के सुविधा के लिए CSD कैंटीन बनाया जाना अति आवश्यक है। इसके साथ साथ ECHS जो सैनिकों के लिए मेडिकल सुविधा है, उनके लिए भी सैनिकों को वाराणसी का रुख करना पड़ता है, जो सैनिक व उनके परिवारजनों के लिए असुविधा का कारण बना हुआ है। माननीय उपसभापति महोदय जी, मैं आपके माध्यम से, सदन के माध्यम से जनपद गाजीपुर में CSD कैंटीन व ECHS जो सुविधा युक्त हो स्थापित करने की मांग करती हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। श्री तिरुचि शिवाजी, need to strengthen physical equity for balanced national growth. Sir, this is to thank you, Deputy Chairman, sir. This is to address the issue of fiscal federalism and the persistent neglect faced by Tamil Nadu in the allocations of financial resources and project sanctions by the union government, which undermines the spirit of cooperative federalism. Sir, the Tamil Nadu is always facing a stepmotherly treatment over the years, which is evidenced by inadequate disaster relief, dilution of tax devolution, and disproportionate project sanctions. Sir, the two twin cyclones, the Fengal and Michang, and the unprecedented floods due to torrential rains in the southern parts of Tamil Nadu has caused massive damage
whereas the union government has released only 267 crores against the demand of the state government of 37,906 crores. So this is very meager than compared to the demand. Sir, the gross inadequacy disregards not only the magnitude of the devastation, but also the strain on the states. Further, sir, the DPR, that is the detailed project report for the Madurai and Coimbatore metro rail projects have been submitted in February 2002. Then again, as per the directions of the union government, the requisite comprehensive mobility plan and the alternative analysis report have also been submitted in December 22. Whereas the continued bureaucratic delays and scrutiny at multiple levels reflect a pattern of neglect that stalls the Tamil Nadu's development. Sir, Tamil Nadu's population is only 6.9%, whereas it contributes 9% to the GDP. I don't want to compare other states which have more population and contributing lesser. Whereas the 9th Finance Commission has given 7.93% to Tamil Nadu. In the 12th Commission, it has come down to 5.305, and now it is only 4.079. It is diminishing day by day. And sir, I have a lot to say. The Manarega scheme 3,797 is pending. So also the PM AY, Gramin and Urban is also pending. In this situation, I would urge the union government to ensure equitable disaster relief, revise the horizontal tax devolution in order to reward the tax contribution and fiscal discipline, and address the structural inequalities that continue to penalize Tamil Nadu and other progressive states. Promoting equitable fiscal policies across the country is not just a constitutional mandate, but a necessity for India's balanced development. Thank you very much, sir. Thank you. Shri Pramod Tiwari ji, concern over unprecedented decline in school enrollment. मनोहर, ये सरकार बहुप्रचारित नारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दे के आई थी, लेकिन हकीकत बिल्कुल इसके उल्टा है। शिक्षा मंत्रालय की शिक्षा के लिए एकीकृत जिला सूचना प्रणाली UDISE रिपोर्ट के अनुसार पहली बार स्कूल नामांकन के आंकड़े 2022-23 में 25.17 करोड़ तक गिर गए। 2023-2024 में और भी कम होकर 24.8 करोड़ हो गए, या 2018-19 में से 2021-20 की अवधि में लगभग 1.55 करोड़ छात्र, जो लगभग 6% है, गिरावट को दर्शाता है। यह रिपोर्ट इस बात पर सवाल उठाती है कि मोदी सरकार भारत के युवाओं को, भविष्य को सुरक्षित रखने में किस तरह विफल हुई है। यह गिरावट केवल एक नंबर नहीं है, यह बढ़ती आर्थिक असमानता और आर्थिक कुप्रबंधन को दर्शाता है, जो गरीब परिवारों को अपने बच्चों को स्कूल से निकालने के लिए मजबूर कर रहा है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और आसाम जैसे राज्यों में ने बताया कि उनके स्कूल के कमरे कम उपयोग में हैं, जबकि तेलंगाना, पश्चिम बंगाल और पंजाब जैसे राज्य अत्यधिक बोझ और बुनियादी ढांचे से जूझ रहे हैं। यह सिर्फ संख्या में कमी नहीं है, यह एक पीढ़ी की शिक्षा तक पहुंचने के खोने का मामला है। लाखों बच्चे स्कूल से बाहर, इसलिए आंकड़े चेतावनी देने वाले हैं। लेकिन सवाल है, क्या सरकार अपने निर्धारित कामों को प्राथमिकता देगी या प्रचार और छवि निर्माण में ज्यादा दिलचस्पी लेगी? मैं सदन के माध्यम से आग्रह करता हूं कि सरकार स्कूल नामांकन के आंकड़े की गिरावट में स्पष्टीकरण दे। ये कैसा हिंदुस्तान बनाना चाहते हैं? और फिर बजट भी कम कर दिया, यानी कि शिक्षा को लेके सीरियस नहीं है। ये सच्चाई ये है कि शिक्षित बेरोजगार नहीं पैदा करना चाहते, उनको शिक्षा नहीं देना चाहते जिससे वो सरकार से पूछ सके कि हमारे अधिकार क्या हैं। ये बेरोजगारी कम नहीं कर पा रहे हैं, रिकॉर्ड बेरोजगारी हो रही है, इसलिए सारी चीजें आ रही हैं। ये चौंकाने वाला आंकड़ा है। सरकार के दावों के उलट देश में हर घंटे महिलाओं के खिलाफ 43 अपराध दर्ज हो रहे हैं। अब इस पर महिलाओं पर ना विषय है स्कूल एनरोलमेंट का। स्कूल में महिलाएं नहीं पढ़ती। अरे प्लीज, स्कूल में महिलाएं नहीं पढ़ती। आप विषय पर बोले, आप खुद अनुभवी। मैं सिर्फ विषय पर बोल रहा हूँ, यही नोटिस दी मैंने आज। बताएं, बोलो। आप देख लें मेरी नोटिस। आप बताएं।
हमारे देश में आदिवासी वर्ग की महिलाओं और बच्चों के खिलाफ हर दिन 22 अपराध दर्ज हो रहे हैं। मणिपुर की महिलाओं को कब न्याय मिलेगा, चाहे वो हाथरस की दलित बेटी हो, हमारी चंपन महिला पहलवान। मेरा सवाल ये है कि शिक्षा के क्षेत्र में क्यों रोका जा रहा है? मानवर इनरोलमेंट पर है। तिवारी जी बैठ जाए। श्रीमती जेबीर माथेर हिसम, कंसर्न ओवर निगेटिव इम्पैक्ट ऑफ डीप सी। माननीय सदस्य बहुत सीनियर एमपी हैं, उन्होंने बात कही कि हमने बजट घटा दिया। इतिहास से लेकर अब तक सबसे ज्यादा आवंटन बजट में एजुकेशन के लिए इस बार बजट में। धन्यवाद। श्री जेबी माथेर हिसम, कंसर्न ओवर नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ डीप सी मिनरल एक्सप्लोरेशन एंड माइनिंग along the Kerala coast. Thank you, sir. I rise today to address a very grave issue, the survival of our fishing community, especially the fishermen of Kerala who are under serious threat. The central government has announced deep sea mining and tender process begun. So without even conducting an environment impact assessment, how can they move forward when the experts have seriously said the devastating consequences of this? A large part of Kollam, Alappuzha and other places, the coastal belt, India's richest fishing hub, is in this proposed mining area. Studies from University of Kerala and Cochin Fisheries University clearly warn that sand mining will disrupt fish breeding, destroy coral reefs and destabilize marine ecosystems. 2/3 of the Kerala's soft corals are found here, which are essential for the biodiversity and fisheries productivity. Fishermen have been protesting for 3 long months. Instead of listening to fishermen, the government insists tender first, and then the company that wins the tender can do and will do the environment impact assessment. Sir, nemo judex in sua causa. No one can be a judge in his own cause. How can the very company that profits from mining assess its own environmental impact? First, there must be an independent environment impact assessment. Only if a green signal is received, the tender process should begin, not the other way around. The 2003 amendment to the Offshore Areas Mineral Development and Regulation Act now allows private companies to extract deep minerals from our coastal. This is not just about sand. It is about auctioning off our ocean to corporate interest. Deep sea mining releases toxic sediments, destroys marine life, and weakens our coastal defenses against tsunamis and cyclones. Environmentalists warn it could accelerate climate change by releasing stored carbon, and fishermen will be affected, sir. I urge the government to immediately stop the tender process and halt deep sea activities and first initiate environment impact study. The sea is not a commodity. It is the life and lifeline of our fishermen. And let me be clear, if the government plays with their lives, the government will be the first one to lose this battle, and we stand with them in this fight. The fishermen of Kerala have braved storms and adversity for generations. They will not back down now. धन्यवाद। श्री गोला बाबू राव, concern over less budgetary allocation under the scheme of grant in aids to voluntary and other organizations working for scheduled castes run by Ministry of Social Justice and Empowerment. Sir, thank you very much. The Honorable Deputy Chairman Sahab, I am raising a very important issue. Entire nation awaits for this small solution to this problem. Need for socio-economic caste census. I would like to highlight the need for the socio-economic caste census to be conducted alongside the upcoming general census. Conducting such a census at the national level would allow the entire country to benefit from the policies based on accurate and detailed data. In fact, the Legislative Assembly of Andhra Pradesh, led by the late former
the Chief Minister Sri Jagan Mohan Reddy Garu laid a strong foundation for this in November 2021 by passing the resolution requesting the central government to take up the socio-economic, the caste census, but it is not taken up so far. By simply adding 2 questions to upcoming general census, we can gather crucial data that will greatly benefit the people of Andhra Pradesh also. This data will provide valuable insights that will enable the implementation of targeted welfare programs, address inequalities, and ensure equitable allocation of resources. In the last, my small speech also, I requested Honorable the Finance Minister to increase the allocations to the Social Justice Ministry. The Social Justice Ministry is getting only 2% of the total funds for the entire 80% population we have. Now they include the backward classes, OBCs, scheduled castes, scheduled tribes and minorities, the disabled welfare and the senior citizens also. What I request the central government to rethink, first of all they should take up the caste census. Then it will be very useful for them also to take up the delimitation and to also allot the funds as per their population in India. Now at the same time, it is concerned that 25-26 budget has allocated a reduced budget for the census, which could hinder the exercise by compromising the accuracy and ineffectiveness. Therefore, the government must prioritize the sufficient funding for this critical exercise and make the incorporation. Sri Raiga Krishnaiya demand to constitute a separate ministry for backward classes. Respected Chairman, it is a very important issue pertaining to 80 crores OBC population in the country. There are 93 departments in central government, but the OBC, to look after the OBC welfare, there is no separate ministerial department. To look after the development of welfare of OBCs at all. There are separate ministers for all the departments. Recently, central government formed fisheries department, cooperative department created, but not established separate ministry for OBCs, who constitute more than 56% of population in the country. In the level of the central government implementing 27% reservations, our beloved Prime Minister established a separate constitutional-based National BC Commission and also National BC Corporation, and also there is a parliamentary OBC committee. There have been number of legal disputes to the BC reservations and other issues. Number of problems regarding OBCs in reservations frequently. In OBC list, there are beggars, denotified tribes. Some tribes are included in the OBC list. They are very poor and marginalized communities. They are not even sending their children to school. Such poorer communities there. At this juncture, it is imperative to establish separate ministerial department for the development of these communities. This only can facilitate special attention for the development of these communities. So separate ministry is essential. All the state government, almost all the state government having separate ministerial department for OBCs to monitor and cooperate the schemes and budget. Many problems pertaining to BCs and their reservations are coming to limelight nowadays. Under these circumstances, Department of Union Government level shall be constituted. It is important to look after the welfare of the backward classes. They are the sons of the Bharat Mata, sons and daughters of the Bharat Mata.
they have to take special care to develop these communities in education, employment, in other section of the society. Thank you. Thank you. Srimati Dharmsila Gupta demand to release funds for adding 350 beds in State Cancer Institute of the Indira Gandhi Institute of Medical Sciences, Patna. माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सर्वप्रथम मैं इस सदन के माध्यम से बिहार राज्य के सबसे महत्वपूर्ण स्वास्थ्य चिकित्सा संस्थानों में से एक इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान चिकित्सा संस्थान पटना के महत्व को स्वीकार करते हुए इस पर चर्चा करने का अवसर देने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। महोदय, आपकी जानकारी के लिए यह संस्थान वर्ष 1983 में स्थापित हुआ था और तब से लेकर अब तक न केवल बिहार बल्कि पड़ोसी देश नेपाल एवं नज़दीकी राज्यों खासकर बंगाल, झारखंड और उत्तर प्रदेश के नागरिकों के लिए भी एक महत्वपूर्ण उपचार केंद्र बन चुका है। यहाँ पर उच्च स्तरीय चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध हैं और कैंसर जैसी गंभीर और जानलेवा बीमारियों का उपचार भी किया जाता है। महोदय, मैं विशेष रूप से स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट के बारे में बताना चाहती हूँ, जो इस संस्थान का महत्वपूर्ण अंग है। वर्तमान में यहाँ कैंसर के इलाज हेतु मात्र 100 बेड की उपलब्धता है। यह संख्या न केवल स्थानीय मरीजों के लिए अपर्याप्त है, बल्कि इसकी वजह से मरीजों को समय पर और प्रभावी इलाज उपलब्ध कराना भी चुनौतीपूर्ण हो रहा है। देश में कैंसर जैसी बीमारियों के मामले में लगातार वृद्धि हो रही है। ऐसे में इस संस्थान में बेड की संख्या बढ़ाने की अत्यंत आवश्यकता है। महोदय, इसके अतिरिक्त एक और गंभीर समस्या यह है कि संस्थान में बेड की कमी के कारण मरीजों के लिए सैकड़ों किलोमीटर दूर दिल्ली या मुंबई जैसे महानगरों में जाने के लिए मजबूर होना पड़ता है। इससे न केवल मरीजों के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है, बल्कि उनके परिवार पर भी आर्थिक और मानसिक दबाव पड़ता है। यह यात्रा उनके इलाज को और भी जटिल बना देता है। आदरणीय स्वास्थ्य मंत्री जी से मेरा विनम्र निवेदन है कि इस गंभीर समस्या का शीघ्र समाधान किया जाए और इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान चिकित्सा संस्थान पटना में कैंसर जैसी बीमारियों के इलाज के लिए बेड की संख्या को बढ़ाकर कम से कम 350 बेड तक किया जाए। इससे न केवल बिहार के मरीजों को राहत मिलेगी, बल्कि क्षेत्र के लोगों को बेहतर चिकित्सा सुविधा भी प्राप्त होगी। महोदय, मैं आशा करती हूं कि इस मुद्दे पर उचित कार्यवाही की जाएगी और जिससे कि उन क्षेत्रों को लोगों को उचित Srimati Sudha Murthy, your will be taken up tomorrow at item number 2 in 0 hour. Are you okay with that? Okay, sir, okay. Tomorrow in 0 hour? Thank you, sir. Thank because you hardly had any time. Question hour. Okay. The leader of the opposition has a very good point that she has had multiple occasions. But those who are vigilant get opportunity. You are not vigilant, you are more vigilant. I'll take care of it. I was being considerate that she came too close to it with 20 seconds left. Therefore accommodating. Renuka ji, we'll have a cup of tea today. Question number 271. Shrimati Rajni Ashok Rao Patil. Question number 271, sir. Honorable Minister. Supplementary 1. Shrimati Ashok
रजनी अशोक राव पाटिल। सर, आपके द्वारा मैं पूछना चाहती हूँ कि SC, ST और OBC भारत की आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, लेकिन ये समुदाय आज भी भेदभाव, सामाजिक बहिष्कार, आर्थिक पिछड़ेपन और सीमित अवसरों से चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। सरकार इन वर्ग के उत्थान के लिए क्या ठोस कदम उठा रही है ताकि जितनी आबादी उतना हक के सिद्धांत उनके तहत उनकी उचित अधिकार और प्रतिनिधित्व उनको मिल सके? उसी के साथ क्या सरकार मार्जिनलाइज सेक्शन में समग्र विकास के लिए जातीय जनगणना करने के लिए प्रतिबद्ध है? ऑनरेबल मिनिस्टर। शेड्यूल्ड ट्राइब और वंचित घटक जो है, वंचित घटक को न्याय देने की भूमिका हमारी सरकार की है। जो जाति व्यवस्था अपने को दिखाई देती है उसमें सामने वाले लोग कई साल सत्ता में रहे और उनकी जिम्मेदारी थी कि भाई कस्टम को खत्म करने की आवश्यकता थी। आर्टिकल 17 के मुताबिक, संविधान के आर्टिकल 17 के मुताबिक जाति व्यवस्था खत्म हो चुकी है, लेकिन उसके बावजूद भी आज भी समाज में जागृति आई है। और जो PCR एक्ट है, PCR एक्ट के अंतर्गत उनको अपना हक मांगने का अधिकार दे दिया है। 1989 का जो एट्रोसिटी एक्ट है उसके माध्यम से भी उनको न्याय मांगने का अधिकार है और समाज में जागृति आई है। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने संघर्ष किया और इसके लिए मतलब दलित, आदिवासी, वंचित घटक आगे आ रहे हैं और इसीलिए उनको जागृति आने के कारण अनेक केसेस बढ़ रही है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि शेड्यूल कास्ट PCR एक्ट 1959 और प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट 1989 जो था, इसमें मतलब 2004 से 2014 तक 625.74 करोड़ रुपया जो है ये उनको दे दिया था। उसमें 2,53,00,000 लोगों की संख्या थी। 2014 से 2024 तक मतलब 4,001.77 करोड़ रुपए हमने बांटा है और 27.25 लाख लोगों को हमने ये पैसा दे दिया है। तो इसीलिए मतलब ये वर्ग के पीछे मतलब हम लोग हैं। माननीय नरेंद्र मोदी जी का विजन है कि 25 करोड़ लोग गरीब रेखा के ऊपर आए हैं और भी जो गरीब है उनको ऊपर उठाने की आवश्यकता है और उसके लिए आपने भी हमें सहकार्य करने की आवश्यकता है। मतलब आप तो हमेशा बोलते हाय हाय, आप तो हमेशा बोलते हाय हाय, इसीलिए हम नरेंद्र मोदी जी दे रहे हैं हम सब लोगों को न्याय और इसीलिए न्याय देने के लिए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। जो मांग रजनी पटेल जी की है, रजनी पाटिल हमारी अच्छी मैडम हैं और उन्होंने जो सवाल बहुत अच्छा पूछा है, इसलिए मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं और सभी वर्गों को न्याय देने के लिए हमारी सरकार अध्यक्ष मोदी कटिबद्ध है और हम आगे बढ़ते रहेंगे। सप्लीमेंट्री नंबर 2 श्रीमती रजनी अशोक राव पाटिल। मैं आपके द्वारा अटॉर्नी साहब को मेरी स्पेसिफिक सवाल पूछा था, उसका जवाब उन्होंने भाषण में दिया। फिर भी 2023 में एक संसदीय रिपोर्ट से पता चलता है कि केंद्र सरकार की नौकरियों में ST/SC आरक्षण के तहत कई पद हर साल खाली रह जाते हैं, विशेष रूप में उच्च स्तरीय पद। उसके अनुसूचित जाति और अनुसूचित जमाती के उम्मीदवार केवल निचले स्तर के ग्रुप C टाइप नौकरियों के लिए चुने जाते हैं, तो सफाई कर्मियों के पदों पर ही उनका कोटा कंप्लीट होता है। सरकार क्या कदम उठा रही है ताकि SC/ST समुदायों के लिए केवल निचले स्तर की नौकरियों तक सीमित न रखने और बजाय उसके प्रशासनिक और नीति निर्माण के पदों पर उनको समान अवसर और प्रतिनिधित्व मिले? इसके अलावा आरक्षित पदों के लिए भरने के लिए ये देरी कब तक आप कम करने के लिए क्या कोशिश कर रहे हैं? ऑनरेबल मिनिस्टर। चेयरमैन सर, मतलब शेड्यूल कास्ट के लिए 15% आरक्षण है, शेड्यूल ट्राइब के लिए 7.5% आरक्षण है, OBC के लिए 27% आरक्षण है और इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए 10% आरक्षण है। तो मतलब 10% आरक्षण दे दिया है हमारी सरकार ने, मोदी सरकार ने। उसके पहले जो भी मतलब ये आरक्षण है तो भरने की जो सिस्टम होती है, सिस्टम में पूरा आरक्षण भरा जाता है और जिस तरह रजनी पाटिल जी ने बताया है कि भाई आरक्षण भरने के लिए हमारी कोशिश पूरी जारी है। जब भी रिक्रूटमेंट होती है तब आरक्षण भरा जाता है, वहाँ मतलब एक भी आंकड़ा इधर उधर नहीं होता है। अगर ऐसा कोई है तो आप मुझे जानकारी दीजिए, जरूर मतलब उसमें हम ध्यान दे देंगे। लेकिन जो आरक्षण होता है इस आरक्षण को पूरा भरने की जिम्मेदारी हमारी है। उस घटक को उनका अधिकार मिलना चाहिए, हक मिलना चाहिए, इसके लिए हमारी कोशिश जारी है। अध्यक्ष महोदय।
सप्लीमेंट्री नंबर 3 श्रीमती सुमित्रा वाल्मीकि। माननीय महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय जी से जानना चाहती हूं, वैसे तो हमारी केंद्र सरकार पूरे देश में अनुसूचित जाति के उत्थान के लिए विभिन्न योजनाएं चला रही हैं और उनके उत्थान के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं। महोदय, मेरा प्रश्न है कि मध्य प्रदेश में पीएम अजय योजना के द्वारा किस प्रकार से अनुसूचित जाति बाहुल गांव का विकास हो रहा है तथा मध्य प्रदेश में कौशल विकास योजना के अंतर्गत नियोजित और स्वरोजगार प्राप्त लाभार्थियों की संख्या, अनुदान सहायता घटक का विवरण माननीय महोदय से जानना चाहती हूँ। माननीय मंत्री जी। मान्यवर, मनीष सदस्य जी के द्वारा जो मध्य प्रदेश के संदर्भ में प्रश्न उठाया गया है, देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में समाज की सबसे अंतिम पंक्ति के अंतिम छोर पर जो व्यक्ति है, उस अंतिम छोर के व्यक्ति के विकास के लिए, उनके सामाजिक आर्थिक शैक्षणिक सशक्तिकरण के लिए बहुत सारी योजनाएं बनाई गई। और जब हम योजनाओं की बात करते हैं तो हमें इन बातों पर विचार करते समय हमें इस बात को भी देखना पड़ेगा कि 2004 से 2014 के बीच में अनुसूचित जाति के लिए, लाभ वंचित समूहों के लिए, दिव्यांगजनों के लिए और अनुसूचित जनजातियों के लिए जो 2004 से 14 के बीच में अनुसूचित जातियों के लिए जो बजट था, 16,508.9 करोड़ रुपए का प्रावधान इसमें किया गया था। वो 2014-24 के अंतर्गत बढ़ के 61,619.59 करोड़ रुपया हो गया। इसी तरह से सामाजिक न्याय विभाग के अंतर्गत जो वंचित समूह हैं, हमारी बहन ने वंचित समूहों के बारे में बात की थी, जो बजट 2004 से 14 के बीच में 6,388.90 करोड़ था, वो 2014 और 24 के बीच में बढ़कर 20,992.82 करोड़ रुपया। हम दिव्यांगजनों की बात करें तो दिव्यांगजनों के लिए 4 से 14 के बीच में जो आवंटन था वो 1047.20 करोड़ रुपए का था। वो दिव्यांगजनों के प्रति देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के मन में जो संवेदनशीलता है वो सर्वविदित है। पहली बार उन्होंने इनको दिव्यांगता से जो संबोधित किया, इससे दिव्यांगजनों के मन में एक उत्साह का उत्साह का वातावरण आया और ये जो 1048.20 करोड़ बजट था, ये बढ़कर 8,821.71 करोड़ रुपया हो गया। इसी तरह से अनुसूचित जनजाति के हमारे समुदाय के बंधुओं के लिए जो बजट 13,449.28 करोड़ था, वो 2014-24 के बीच में बढ़कर इन 10 वर्षों में 51,276.92 करोड़ रुपया हो गया। ये आंकड़े इस बात को बताते हैं कि केंद्र सरकार वंचित समूहों के लिए, समाज के सबसे अंतिम छोर के अंतिम स्थान पर बैठे हुए व्यक्ति के समग्र विकास के लिए किस तरह से उनके विकास के लिए संवेदनशीलता के साथ में काम कर रही है। यहां तक मेरी बहन ने मध्य प्रदेश में पीएम अजय योजना के संदर्भ में वहां पर अनुसूचित जाति बाहुल्य गांव में किस तरह से काम हो रहा है, माननीय मैं बतलाना चाहता हूं, अवगत कराना चाहता हूं। प्रधानमंत्री अभ्युदय योजना, जिसको पीएम अजय योजना के नाम से जाना जाता है, ऐसे गांव जो 500 या 500 से ज्यादा की आबादी के गांव हैं और जिसमें 40% आबादी अनुसूचित जाति के बंधुओं की है, ऐसे गांव को प्रधानमंत्री अजय योजना के अंतर्गत आदर्श ग्राम योजना में शामिल किया गया। इसमें 3 घटक हैं, आदर्श ग्राम, अनुदान सहायता और छात्रावास। इन 3 घटकों के अंदर यहाँ देश भर में बहुत सारे कार्य हुए हैं, जिसमें लगभग हम अगर पूरे देश की बात करें तो आदर्श ग्राम घटक के अंतर्गत 23 राज्यों में और केंद्र शासित प्रदेशों में 1628.64 करोड़ रुपए जारी किए गए और 11,022 गांव को आदर्श गांव घोषित किया गया। अनुदान सहायता घटक की अगर बात की जाए तो 2,01,006 लाभार्थियों को 1244.849 करोड़ रुपए प्रदान किए गए और इसी तरह से छात्रावास घटक के अंतर्गत
69,212 लाभार्थियों को कवर करने के लिए 866 छात्रावासों के निर्माण के लिए 936.27 करोड़ रुपया मंजूर किए गए। ये बताते हैं कि हम अंतिम गांव के, जो हमारा गांव है, अंतिम छोर पर रहने वाला व्यक्ति है, उसके समग्र विकास के लिए भारत सरकार माननीय मोदी जी के नेतृत्व में पूरी संवेदनशीलता के साथ में इस क्षेत्र में काम कर रही है। और मध्य प्रदेश के संबंध में बताना चाहता हूं कि 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश राज्य की कुल आबादी 7,26,26,809 है, जिसमें से अनुसूचित जाति की जनसंख्या 1,13,42,320 है, जो कि कुल जनसंख्या का 15.60% है। जो केंद्र प्रायोजित योजना है PM अजय योजना, इस योजना के कार्यान्वयन के लिए मध्य प्रदेश में 3 घटकों के लिए, यानी आदर्श ग्राम के लिए, अनुदान सहायता के लिए और छात्रावास के लिए 1690 चयनित गांवों के लिए 210.74 करोड़ रुपए जारी किए गए और चयनित 1690 गांवों में से 1223 गांवों को मध्य प्रदेश में आदर्श गांव घोषित किया गया और कुल 5,292 कार्य इन गांवों में किए गए, जिससे कुल 11.5 लाख अनुसूचित जाति की आबादी लाभान्वित हुई है। मध्य प्रदेश में आदर्श ग्राम घटक के अंतर्गत 10 क्षेत्रों में काम किए गए, जिसमें आंतरिक सड़कों का निर्माण, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, सीवेज का निर्माण, पीने योग्य पानी, पेयजल सुविधाएं, स्कूलों और आंगनबाड़ियों में शौचालय और गांव का ऐसे गांव में विद्युतीकरण। अनुदान घटक सहायता में मुख्य रूप से लघु सिंचाई, बागवानी, बकरी पालन, खाद्य प्रसंस्करण, इनसे संबंधित परियोजनाओं के लिए मध्य प्रदेश को 523.68 करोड़ रुपए जारी किए गए, जिससे लगभग 1.5 लाख लाभार्थी लाभान्वित हुए हैं। छात्रावास घटक के अंतर्गत मध्य प्रदेश में 86 छात्रावास स्वीकृत किए गए, जिससे 6,150 छात्र लाभान्वित हुए हैं और 128.3 करोड़ रुपए इसके लिए जारी किए गए। ये मध्य प्रदेश में इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री मध्य प्रदेश के लिए मध्य प्रदेश के संदर्भ में विशेष रूप से प्रश्न पूछा गया था माननीय सदस्य के द्वारा, और इसलिए मैंने समग्र देश के बारे में पहले पार्ट में जानकारी रखी, दूसरे भाग में मध्य प्रदेश की जो जानकारी अपेक्षित की गई थी उसके बारे में जानकारी उपलब्ध कराई गई। और प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना में 51 जिलों में 267 ब्लॉकों में 11,377 गाँव में पूरे देश में 93,231,125 आबादी के लिए इसमें काम किए गए हैं प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना में। यह प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के आंकड़े अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में अनुसूचित जाति के 1,72,218 गांव 218 व्यक्तियों के लिए उनके लिए प्रशिक्षण दिया गया और उनमें से 32,353 व्यक्ति जो है ना अनुसूचित जाति के, उनको रोजगार के अवसर उपलब्ध हुए। इसी तरह से ST आबादी के लिए 83,822 गांव मध्य प्रदेश के अनुसूचित जाति के बंधुओं को उनको प्रशिक्षण दिया गया और उनमें से 18,396 बंधुओं के लिए रोजगार के लिए अवसर उपलब्ध है। धन्यवाद। The supplementary was very comprehensive. So was the reply. Sir, very comprehensive about Madhya Pradesh. We are very grateful to the Sir, you know the Honorable Minister, he is having 7th running term in Lok Sabha. 7th running term. He has seen all the regimes of this century. Supplementary number 4, आदरणीय जया जी। मंत्री जी, मैं भी मध्य प्रदेश से आती हूँ। मध्य प्रदेश के पिछड़े जिलों को मैंने देखा है और महिलाओं के लिए, पिछड़े जातियों के लिए, आदिवासियों के लिए आपने इतना सारा पैसा दिया। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, ये जो आपने घोषणाएं की उसमें से आपने यूटिलाइज कितना किया और कितना वापस किया? माननीय मंत्री जी, Any census? Have you taken any census of the number of these women? माननीय सदस्य ने माननीय मंत्री जी, मध्य प्रदेश देश का ही एक हिस्सा है और यहाँ जब मंत्री, कोई भी विभाग का मंत्री जब उत्तर देने के लिए खड़ा होता है
तो वो एक क्षेत्र का प्रतिनिधित्व नहीं करता, वो समग्र देश का प्रतिनिधित्व करता है। और इसलिए जब जो बात यहाँ पर रखी जाती है, माननीय मंत्री जी, एक सेकंड, माननीय जी, उन्होंने मध्य प्रदेश के ऊपर जवाब दिया, आपने मध्य प्रदेश के लिए पूछा, आपने मध्य प्रदेश का जवाब दिया, आप मध्य प्रदेश से आते हैं, तो मैंने भी उसी संदर्भ में आपसे पूछा। प्लीज, मैंने आपको पूरे देश के लिए नहीं पूछा। You were specifically answering about Madhya Pradesh. How can you just suddenly change and say I'm talking of the entire country? Give us the census. Have you taken a census of the entire country and at least from Madhya Pradesh, since you are from Madhya Pradesh? Honorable Minister. घोषणा करते हैं, काम करते हैं। जैसा कि मैंने पूर्व में कहा, उत्तर समग्र रूप में ही दिया जाता है, लेकिन मध्य प्रदेश की उन्होंने स्पेसिफिक बात की, तो मैं समझता हूं कि मैंने पूर्व में जो उत्तर दिया है, उत्तर का जो दूसरा भाग है वो मध्य प्रदेश के ऊपर केंद्रित करके ही दिया गया। और मध्य प्रदेश में विभाग के द्वारा, मंत्रालय के द्वारा पीएमएलए योजना के अंतर्गत जो काम किए गए, चाहे वो आदर्श ग्राम घटक के हों, चाहे वो अनुदान सहायता के हों, चाहे वो छात्रावास योजना के हों, उन्होंने सारे उसकी सारी की सारी जानकारी मैंने रख दी है। और मान्यवर आप कहेंगे तो मैं फिर से उसको मध्य प्रदेश का फिर से रिपीट कर देता हूं। माननीय मंत्री जी, माननीय सदस्य ने आपके जवाब जो बहुत विस्तृत था, और जवाब विस्तृत इसलिए था कि माननीय सदस्य श्रीमती सुमित्रा वाल्मीकि ने वो चीजें पूछी थी, पर माननीय सदस्य जया जी जानना चाहती हैं कि आपने जो विवरण दिया है वो एक्चुअल ग्राउंड रियलिटी का दिया है या प्रोजेक्शन का दिया है? सिंपल है, यूटिलाइजेशन वही। मान्यवर मैंने जो उत्तर दिया है पूरी तरह से ऑथेंटिक, पूरी जानकारी के सहित दिया है, और इसमें अगर कोई विसंगति होती हो तो उसकी सारी जिम्मेवारी मैं अपने ऊपर लेता हूं। सप्लीमेंट्री 5 श्री उपेंद्र कुशवाहा। उपेंद्र जी। माननीय मंत्री जी ने विस्तृत जानकारी दी है, और जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या वंचित समाज के लोग हैं, उनके साथ हो रहे भेदभाव को दूर करने के संदर्भ में क्या इनकी नीति है, क्या योजना है, उसके बारे में जानकारी दी है। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि एक क्षेत्र जो देश का बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है, वहां निरंतर भेदभाव हो रहा है, अनुसूचित जाति के, अनुसूचित जनजाति के या वंचित समाज के, ओबीसी समुदाय के लोग हैं, इनके साथ वहां निरंतर भेदभाव हो रहा है। और वह क्षेत्र है उच्चतर न्यायपालिका। उच्चतर न्यायपालिका में ओबीसी, ईबीसी या अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोगों का प्रतिनिधित्व नहीं होता है। कभी कभी अपवाद के लिए एकाध जज भले बन जाते हैं। तो इतना बड़ा समुदाय और इतनी महत्वपूर्ण संस्था, संवैधानिक संस्था, वहाँ अगर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या ओबीसी समाज के लोगों का